Now, when we will be in the CIMA exam, when we will be going in CIMA, this is the only thing you are getting in the first task: exhibit, information, annexure, whatever you say, and then the requirement, the explanation. The pre-seen material you have already read before the exam. This is the exhibit you will be getting. In CIMA, in place of saying this, that this is of 18 marks or 4 marks, what they will say? We can say that this is a 36 marks question. Out of 36, 18 plus 4, 22. Out of 36, 22 marks will be how much percentage? 22 by 36, what will be the percentage? 22 by 36, what will be the percentage? Please tell me. 22 by 36, what will be the percentage? 60%. So CIMA will be writing in the bracket 60%. And in the bracket for part B, CIMA will be writing 40%. That means story say approximately 61 means they will say 60%. That's chalega, no problem. That means they are indirectly focusing on you that you need to give 60% time for A and 40% time for B. 60% marks for A, 40% marks for B. And for ACC also, by the marks we are getting this feeling only. There is no different feeling. Maybe the marks are given, doesn't matter as such. For CIMA, they are not writing that which professional skills are covered. But then in CIMA also, communication, evaluation, then you can say all the skills which are asked as a professional skills, they are there. But they don't mention specifically कि आपको यहाँ ये cover करना है. ACCA में specifically mention कर रहे, but mention करने या नहीं करने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं. When you are writing a proper answer, whatever professional skills they are saying, they will be automatically covered, which you will understand just now when I will explain the answer when we will discuss. मतलब प्रोफेशनल का अलग से लिखने का कोई फीलिंग का बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है. इट इज नॉट गिविंग यू अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर. मेन बात क्या है? विच इज कॉमन. दीज आर द डिफरेंसेस विच इज कॉमन. इफ आई एम गिविंग एनी एग्जाम एंड देयर आर 3 टास्क, देन मोटा मोटी ईच टास्क आई एम गोइंग टू टेक 1 hour. Out of 1 hour, reading the exhibit, reading the requirement is already taking my 10 minutes approx. Somebody will say that sir 12-13-15 minutes लगेगा. ठीक है, मैं मोटा मोटी की एवरेज पकड़ के चल रहा हूं. 10 minutes already gone in reading the exhibit and requirement. So we are left with 50 minutes. Or maybe somebody is left with 45 minutes. Out of 50 or 45 minutes, when you will be writing your answer, typing your answer, 60% time you are going to give to the party. 60% time means you can say 50 into 60%, 30 minutes, or 45 into 60%, you can say around 27 minutes. In every minute, the typing speed should be 1.5 line per minute. So in 27-30 minutes, the length of the answer should be 45 lines. If you can type more, very well. But you can't type less than 40 lines. 45 के बदले 44, 43 चलेगा. Less than 40 lines, that means you are not covering the adequate part so that you can get the pass marks. But if suppose you are liking the first question better than the second one, and in place of 27 or 30 minutes, you have given to the first answer 40-45 minutes, and for the second one you are writing just 5 minutes. That is a big mistake we will be doing in the exam. Because out of 60%, you can't get 70% marks. 60 में से 60 मिलेगा. And already theory है, तो full 60% तो generally नहीं मिलेगा. Theory में कुछ तो marks कटेगा ना. I am not liking what you are writing, some points and all that. So you need to understand, if you are not giving your time properly to both the parts, your answer will not be good. And then the chances of failing the exam will increases. Because you are not giving justice to what is required.
लेंथ आपका ठीक होना चाहिए और दोनों पार्ट का आंसर लिखना होगा. यू हैव टू राइट आंसर फॉर बोथ द पार्ट्स. दिस इज कॉमन फॉर ACCA सीमा. नो डिफरेंस. नंबर दे रहा है, परसेंटेज डजेंट मैटर. दोनों के लिए ये जरूरी है कि मेरे को पूरा आंसर प्रॉपरली दोनों पार्ट प्रॉपर टाइम देना है. मे बी इन द फर्स्ट वन यू आर टेकिंग 31-32 मिनट्स, ठीक है, बट बियॉन्ड 35 मिनट्स इफ यू आर टेकिंग द फर्स्ट वन, दैट मीन्स यू आर डूइंग मिस्टेक. If you are taking 45 minutes in reading planning, then 15 minutes, then 45 into 60% and 40%. If you are taking whatever time, आपको time management this cannot be done on the day of exam straight away. This need to be done every day, every time. When you are writing, somebody will say at the end of exam, sir कितना length का? हम तो हर क्लास में बात कर रहे हैं. तो at the end of exam, when that exam is coming and you are asking this question, I generally feel that the student has not studied anything. कि एक बात जो फर्स्ट क्लास से कर रहे हैं और अगर वो आखिरी क्लास में भी पूछा जा रहा है तो फिर उसका क्या आंसर दूं मैं? पिछले दिन भी बोला, आज भी बोल रहा हूं, हर क्लास में बोलूंगा ये बात. एवरी टाइम, अगेन एंड अगेन. दैट व्हाई, व्हाट, हाउ यू नीड टू प्रिपेयर. Because you will feel your success when you pass the exam. Institute feel when the student pass the exam. I feel when we pass the exam. Normally हम लोग को वैसे ये सोचना नहीं चाहिए. Passing or failing the exam is not a success. Intrinsically, if you say, what you learned, how can you apply that in practical life? That is more important than passing the exam. But क्या है कि दुनिया में सब लोग केवल पास फेल को ही सक्सेस मानते हैं. तो हम लोग उस हिसाब से ही बात कर रहे हैं, क्या करें. अदरवाइज तो ये बिजनेस प्रॉब्लम्स आप अगर सोचते हो कि यू विल बी गेटिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ बाय डूइंग सीमा ACCA, क्वेश्चन वहां नहीं आता है. क्वेश्चन आता है व्हेन यू आर प्लेसिंग ऑन द टेबल, आई एम ACCA मेंबर, आई हैव 10-12 years ऑफ एक्सपीरियंस, यू आर सेइंग आई एम अ सीमा मेंबर. वो ड्रिल करेगा आपको. इन द इंटरव्यू दे आर नॉट कंसर्न विथ योर डिग्री, दैट्स जस्ट एन एंट्री कि यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब, बट देन दे विल ड्रिल इन प्रैक्टिकल सेंस. सो नंबर लाने से एक बार खुशी होएगा, बट अल्टीमेटली अपॉर्चुनिटी तो लाइफ में जीत समझने से मिलेगा ना. तो अब उस समझने वाला एरिया पे आते हैं. ये प्लानिंग हो गया. अभी ये है कि पहली बात ये आती है कि रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या फॉर्मेट है. व्हाट इज द फॉर्मेट वी नीड टू मेंटेन. We have discussed in the last class that report किसको दे रहे हैं. Report to the board of directors of College. कौन दे रहा है? The consultant. Date September 2023. Subject report क्या चीज के बारे में है? Report about the financial and non-financial benefits and drawbacks relating to different routes. The relating to different expansion routes. Then comes an introduction paragraph. The introduction paragraph should actually explain in 2-3 lines what you are going to cover in the entire report. That introduction should be based on the requirement only. Subject में आपने केवल subject लिखा, अभी introduction को थोड़ा explain करेंगे, लेकिन 10 लाइन नहीं. आपको बेनिफिट ड्रॉबैक्स लिखना है, आपको फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स लिखना है, उस पर ध्यान दीजिए. आप ये मत सोचिए कि मेरे को केवल इंट्रोडक्शन में ही बकबक करते जाना है, बिकॉज द मार्क्स विल बी अलॉटेड बेस्ड ऑन फाइनेंशियल ड्रॉबैक्स, बेनिफिट्स, नॉन फाइनेंशियल ड्रॉबैक्स एंड बेनिफिट्स. मान लीजिए इन फाइनेंशियल यू आर राइटिंग फॉर एवरी रूट्स 1 पॉइंट, नॉन फाइनेंशियल यू आर राइटिंग फॉर एवरी रूट्स 1 पॉइंट. तो इन दैट केस 8 पॉइंट तो ऐसे ही हो गया है. अब समझिए, फॉर एवरी रूट यू नीड टू राइट, सो 8 पॉइंट ऑलरेडी आपको 8 पैराग्राफ लिखना है. एंड फॉर एवरी पॉइंट इफ द एग्जामिनर इज थिंकिंग टू गिव यू 2 मार्क्स, सो 8 पॉइंट के लिए 16 मार्क्स, 16 मार्क्स, 2 मार्क्स ईच. द फाइनेंशियल 4 पॉइंट्स फॉर 4 रूट्स, द नॉन फाइनेंशियल 4 पॉइंट फॉर 4 रूट्स दैट कवर बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स बोथ. बेनिफिट्स और ड्रॉबैक लिखने का एक पॉइंट, यानी कि 1 पॉइंट फाइनेंशियल नॉन फाइनेंस, सारा कवर करने का 16 पॉइंट. 8 2 जा 16. Examiner will tell me, if I am the examiner, the head examiner, the team of examiner will be telling me how the marks should be allocated, should be allotted to students. मैं तो वैसे examiner, head examiner बन रहा हूं. The 2 marks on the formats and all that. और अगर आपका अच्छा से सब कुछ लिखा हुआ है, 4 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएगा.
वो कॉमर्शियल एक्यूमेन ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। आपको उसके लिए अलग से यू डोंट नीड टू थिंक सेपरेटली एनीथिंग, कुछ अलग से नहीं सोचना है। अभी अगर टेक्निकल बात करें तो फिनेंशियल नॉन फिनेंशियल होता क्या है, और टेक्निकल बात करें तो व्हाट इज कॉमर्शियल एक्यूमेन। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी गो इनटू टेक्निकल विच इज अकॉर्डिंग टू मी, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी एक बार पूछा तो थोड़ा तो टेक्निकल बात करें। फाइनेंशियल मतलब कैश फ्लो, प्रॉफिट, सेल्स, मार्जिन, एसेट्स, लाइबिलिटी। फिनेंशियल्स जिनका फिनेंशियल फिगर्स होता है। नॉन फिनेंशियल मीन्स कस्टमर, सप्लायर्स, स्टाफ, इंटरनल प्रोसेसेस एंड ऑल दैट। रिलेटिंग टू दिस there is a very famous model called बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड बोलकर एक मॉडल होता है, उसमें अपने 4 पर्सपेक्टिव देखते हैं। फर्स्ट पर्सपेक्टिव इज फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, सेकंड पर्सपेक्टिव इज कस्टमर पर्सपेक्टिव, थर्ड इज इंटरनल पर्सपेक्टिव, फोर्थ इज इनोवेटिव एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव। If you want to write your answer based on the balance scorecard, you can. But मेरे हिसाब से अब जब बैलेंस स्कोर कार्ड से लिखने जाओगे प्रॉब्लम होएगी आपको, बिकॉज आप फिनेंशियल पर्सपेक्टिव अगर लिखोगे तो आप 4 रूट को फिर उसमें डालोगे। फॉर ईच रूट द फाइनेंशियल एरियाज यू विल एक्सप्लेन। फिर आप नॉन फिनेंशियल अगर लिखोगे तो उसमें आपको कस्टमर, लर्निंग और इनोवेटिव, या आपको कुछ और ही लिखना है, आप वही पॉइंट लिखोगे, फिर आप 4 को लिखोगे, थोड़ा स्ट्रक्चरिंग में प्रॉब्लम आएगा। क्वेश्चन ये आता है कि मेरे को क्यों जानना है कि बैलेंस स्कोर कार्ड एक टेक्निकल मॉडल है जिसमें फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल एरिया को कवर किया गया है। और भी एरियाज है, फिट्जराल्ड एंड मुन मॉडल, अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, बहुत सारे मॉडल्स है, आपके बुक्स में लिखा हुआ भी है। फॉर अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जनरली वी यूज फिट्जराल्ड एंड मुन मॉडल। आपको वो मॉडल यूज करना है, उसमें लिखा हुआ है पैरामीटर्स, उसमें लिखा हुआ है रिवॉर्ड्स, उसमें लिखा हुआ है क्राइटेरिया। मेरे को भी फिट्जराल्ड एंड मुन मॉडल तो याद ही नहीं है, इवन दो आई जस्ट नाउ टॉट इन द एपीएम सिलेबस इन द प्रीवियस बैच। मेरे को याद करना ही नहीं है, क्यों करना है हमको? आर दे आस्किंग राइट फिट्जराल्ड एंड मुन मॉडल? नहीं बोल रहे। सपोज यू आर रेफरिंग अ मॉडल आंसर समवेयर and they are using balance scorecard, somewhere they are using Fitzgerald and Munn model, कोई काम नहीं है यार। आप सीधा ध्यान दीजिए ना कि प्रैक्टिकल बात क्या है। फाइनेंशियल नॉन फिनेंशियल मींस व्हाट? फिनेंशियल मींस पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट में जो जो फिगर्स आते हैं, फिनेंशियली प्रॉफिट, लॉस, कैश फ्लो, एसेट्स, लाइबिलिटी, दैट इज कॉल्ड फिनेंशियल एंगल। नॉन फिनेंशियल एंगल customer, supplier, then supply chain, then you can say staff, innovations, those are called non-financial. We always say that financial goal we will be able to achieve when our non-financial things are doing well. I will be able to get more and more students when I am teaching in the classes properly, when I am solving your doubts, when my customers are satisfied, when my staff are happy, when I have proper resources. यानी कि दुनिया में सभी जगह जानते हैं कि फाइनेंशियल गेन पाने के लिए नॉन फिनेंशियल का होना बहुत जरूरी है। ये हुआ, यू कैन से अ बैकग्राउंड ऑफ फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल फैक्टर्स। मान लीजिए किसी को नहीं मालूम है तो आंसर गड़बड़ आएगा ना। आप चाहे बैलेंस स्कोर पढ़े चाहे कुछ भी, फिनेंशियल मतलब जिसका फिगर्स है, जो पीएल बैलेंस शीट से रिलेटेड है। नॉन फिनेंशियल मतलब जो इनडायरेक्टली पीएल बैलेंस शीट से रिलेटेड है। नॉन फिनेंशियल वर्क करने से फिनेंशियल गेन अपने आप आता है। देन कम्स कॉमर्शियल एक्यूमेन। कॉमर्शियल एक्यूमेन का मतलब होता है, इन सिंपल टर्म, इन माई लैंग्वेज, नॉट रिटन इन एनी बुक, वी आर गोइंग टू एडवाइज विच रूट इज गुड और बैड एंड ऑल दैट बेस्ड ऑन बिजनेस गेन एंड लॉसेस, नॉट फॉर चैरिटी. If there is a question or case study or not for profit oriented organization, then you will think about charity, public welfare also. But here it's a business case study, it's a profit oriented organization listed in the stock exchange. तो आपको ये सोचकर आंसर बताना है, you need to cover that
how it is going to benefit the organization, how it is going to adversely affect the organization. दूसरा कॉमर्शियल अक्यूमेंट मतलब होता है यू कांट बी सजेस्टिंग एनीथिंग जस्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ. You need to think about who are the competitors, what is going on in the market, considering that market condition and situations and all that, is this a good thing to be done? तो जब हम लोग बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स लिखेंगे हम लोग ये कवर नहीं करेंगे क्या? हम लोग तो वैसे भी कवर करने वाले हैं. कमर्शियल एक्यूमेन को अलग से सोचने की क्या जरूरत है भाई? मैं तो बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स जब एक्सप्लेन करूंगा आई विल बी कंसिडरिंग दीज एस्पेक्ट्स इन माई आंसर. Otherwise, तो my answer is automatically wrong. तो for CIMA not written कि you apply commercial acumen. ACCA के लिख दिया तो क्या फर्क पड़ता है? When you go in the past term papers of the ACCA and you go the examiner's marking guidelines, how they are allotting 4 marks? They are saying that whether the answer is written as per requirement very well. Commercial 4 में 4, 3 to 4. Whether the answer is not written as per the requirement properly. For professionalism, commercial professionalism, you will be getting 1 or 2 marks. If the answer is not written anything relating to the requirement, for commercial acumen professionalism, laddu marks. That they have written in every answer. Every model answer they have written this. यानी कि आपका ऊपर जो आंसर है उससे ये कवर होगा. कॉमर्शियल एक्यूमेन ऑब्वियसली एक बार मान लीजिए इंस्टीट्यूट ने बताया है तो रेफर करना चाहिए भाई. कॉमर्शियल एक्यूमेन होता क्या है? दैट इज शेयर्ड विथ ऑल ऑफ यू. वेयर द क्वेश्चन इज नॉट क्लियर देन वी विल डिस्कस दिस थिंग. आई डोंट थिंक एनी क्वेश्चन इज नॉट क्लियर. 90% क्वेश्चन आर क्लियर. जस्ट 10% क्वेश्चन समटाइम्स आर नॉट क्लियर. तो जब क्लैरिटी नहीं होएगी तब अपने लिखेंगे ना. अभी तो कोई नॉन क्लैरिटी नहीं है. नहीं क्या राविश जी? सो वाई वी थिंक निगेटिव, है ना? एज पर द इंस्टीट्यूट गाइडलाइंस, कॉमर्शियल एक्यूमेन मीन्स डेमोन्स्ट्रेट अवेयरनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वाइडर एक्सटर्नल फैक्टर्स, वर्क ऑफ एन इंडिविजुअल और अ टीम in contributing to the wider organizational objectives. Use judgment to identify key issues and how to resolve them. So insights and perception in understanding the work related issues. I have highlighted this in summary. This means you have to show awareness of the wider business and external factors affecting business using commercially sound judgment and insights to resolve issues and exploit opportunities. इसका simple understanding meaning क्या है? You are writing the answer for the airline company which is listed for more than 10 years. They have the shareholders and all that. They have the objectives. आपको उसको सोचकर suggestion देना है. While giving your suggestions, you don't think hollow only about the airline coach. You need to think about the environment, other players and everything. तो हम लोग आंसर बेनिफिट और डिसएडवांटेज कैसे लिखेंगे? क्या ये सोचेंगे? नहीं. The best way to acquire the required insights is to do wider reading, whether through newspaper, journals or other sources. ये मैंने नहीं लिखा है. I have taken from ACCA website. मेरा नहीं है भाई. This is all written by institute. The examiners means if you go in Kaplan, if you go in BPP, if you go in ACCA website, they have written commercial acumen का ये meaning है, इसको improve कैसे करना है. The examiners have made it clear that students will be rewarded for demonstrating wider reading by bridging real life explanations into their answers. जिसके लिए हम लोग पिछले दिन बात किए, न्यूज सुनिए, न्यूज़पेपर पढ़िए या कोई ऐप वगैरह डाउनलोड करिए. हर समय कौन सा इंडस्ट्री आएगा किसको मालूम है यार. Which industry they will ask, we don't know. When reading articles, you should ask yourself, what influenced the decision made by the company concerned? What influenced whether those decisions turned out to be successful or not? फिर ये दूसरा प्रोफेशनलिस्ट चालू हो गया, एनालिसिस. This is written by the institute in their write-up. What is commercial acumen? ये उन्होंने लिखा है, मैंने नहीं लिखा है. ये मैंने तो उनका कॉपी पेस्ट किया है.
अब आता है when the question is asking for each routes the financial non-financial benefits or drawbacks, तो हो सकता है आंसर लिखने के टाइम पे एक बार फिर से आपको ध्यान देना पड़ेगा चारों रूट के बारे में कि भाई पहला रूट फॉर बिजनेस ट्रैवल है, हुंडई में है, एंड पैसेंजर का वॉल्यूम सबसे हाईएस्ट है, 80,000 उन्होंने नीचे लिखा है। एक बार टेबल को भी ध्यान दे लेते हैं कि 80,000 monthly passengers, the competition is very high, the expected profit margin will be 10% and the initial investment will be $2 million. So if we are writing financial benefits, this 10%, this 2 million and all that will be covered in the financial benefits and drawbacks. If we are writing non-financial, थोड़ा घर से लाना होगा, थोड़ा सा जो प्री सीन मटेरियल है वहां से ध्यान देना होगा, वैसे जाना होगा। सबसे पहला है, डू वी रिमेंबर इन द प्री सीन मटेरियल व्हाट इज द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द कंपनी एट प्रेजेंट? एग्जाम में रिमेंबर होना चाहिए, एग्जाम में आपको खोलकर देखने का औकात नहीं है। यू कांट ओपन इन द एग्जाम फॉर ईच मैटर द प्री सीन मटेरियल, बिकॉज प्री सीन मतलब एग्जाम से बहुत पहले आपको सी करने के लिए दिया गया। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ROC, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वी से प्रॉफिट मार्जिन दे आर टॉकिंग। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दिस इज एब्सोल्यूट टर्म। हम लोग को ROC ही जाना होगा, मान लीजिए दिस इज इन परसेंटेज टर्म। द ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द कंपनी, was 2018, 19, 20, 2011, 22, it is approximately 13%. But they are saying profit margin. अगर हम लोग profit margin निकाले यहां पर बेटर रहेगा। The revenue is around 5,000 in 2022 and the profit is around 500. So 500 by 5,000 is around 10%. In our business, whatever routes we are doing, whatever business we are doing, we are earning 10%. CIMA में PL account balance sheet details will be given. So you will be doing some ratio calculation based on the pre-seen material in advance. But in ACCA PL balance sheet they are not giving because the material is 12 to 15 page. In CIMA the material is 10 pages extra. So थोड़ा वो लोग दे देते हैं, यहां पर थोड़ा सा हम लोग देख लिए कि around 5,000, around 500. That means presently our profit margin is around 10%. So now if we are suppose 20%, everybody has his own style of writing, but we will be mentioning suppose first route, that is B751. We will be mentioning the financial aspect. Financial aspect में we will be saying it is huge customers involved in this. The revenue will increase by a good margin because huge passengers, but then we can say that competition will be there. It is more or less equal to our existing margin, 10%. So it will not be affecting our margin, and it requires a decent investment of around 2 million. We need to think about arranging the funds of 2 million, but it is going to be matching with our, what do you say, goals and objectives which we want to achieve. But the drawbacks are there. We are budgeted airlines, no frill airlines. Normally we are catering to, what do you say, traveling customers. The business relevant customers we are catering less because we don't have first class or the business class and all that. So in an area where the business travel will be there, and in an area where the competition is very high, how much customers we will be able to attract, that will affect our financial gain and benefit. That I am saying financial drawbacks. Financial benefit, financial drawback. When you write this, you are getting 2 marks. 2 number मिल रहे. इसके लिए, for writing this, which technical study we will be doing?
नो टेक्निकल स्टडी पॉसिबल, नॉट ए सिंगल। और ये क्वेश्चन नहीं, आप जितना भी क्वेश्चन करते जाएंगे, मैं जब पढ़ाते जाऊंगा आपको दिखते जाएगा कोई टेक्निकल का काम ही नहीं है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली फोकसिंग सर सीमा E3 P3 F3। देयर आर स्टूडेंट इन ACCA दोज हु आर डूइंग स्ट्रेट अवे SBL, दे हैव नॉट डन एनी सब्जेक्ट। आपका AFM सपोज सुरोजीत हैज डन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, यहां पर वो 3 सब्जेक्ट का क्या यूज आ रहा है? कोई यूज नहीं है। टेक्निकल एग्जाम नहीं है ये, बहुत ज्यादा टेक्निकल पे टाइम देकर कोई फायदा नहीं। और जिंदगी में भी when you are dealing a practical problem, you are not opening books to see the solution for the problem, वैसा नहीं होता। So these are practical oriented exams। आपको अपना फील्ड डेवलप करके, कोई बोलेगा सर मेरे से ये होता नहीं, कैसे होगा? जब आप इसी तरह से 3 months प्रैक्टिस करेंगे तभी होएगा। somebody is already very good, they are able to think, they are able to write, तो वो ऑलरेडी तैयार है। बट देयर आर somebody who don't able to think along those lines, उनको बनना है। ऐसे हम लोग कम से कम 100 क्वेश्चन से ज्यादा करने वाले हैं, बिलीव मी, 100 से ज्यादा। 100 में हर जगह डिफरेंट डिफरेंट एरियाज कवर करने वाले। दैट विल कवर योर टेक्निकल, दैट विल कवर योर, ठीक है? अच्छा नहीं, नारियल पानी हम नहीं पी, रख दीजिए, देखा जाएगा। The second route, if I will say financial gain along same lines, यहां पर profit margin is very high. It is what do you say? The second route is relating to traveling, where the people are more concerned saving their traveling cost and all that. So वो gain है, margin भी अच्छा है। यहां disadvantage क्या है? What is the disadvantage? Relating to financial benefits, what is the disadvantage in the second route? The drawbacks of the financials in the second. We can put medium, that means since it is a new, the, what do you say, traveling route developed, the passengers are not much. We are forecasting 60,000 passengers, estimating a revenue. But maybe revenue will be very less. Maybe we will not be able to achieve break even. क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन डिसएडवांटेज लिखना तो पड़ेगा ना। तीसरे रूट में जाएंगे, वहां तो ऐसे ही दिख रहे, कस्टमर ही नहीं है। मे बी मार्जिन इज वेरी हाई, बट देन दैट मार्जिन यू विल बी एबल टू रियलाइज व्हेन द पैसेंजर्स विल बी देयर। द पैसेंजर्स आर गोइंग टू बी वेरी लेस, एंड इट मे बी इवन लेस। Maybe the competition is not there, but you are going in a market where nobody is there. Then how you will be able to perform? In the fourth one, margin is very less, investment is very high, but then you want to achieve globalization. You want to create your brand and all that. So for that reason, they are going into there, will expand our brand image. Operating cost per passenger will increase. For that reason, margin is lower. So Trideep, understand, when we start discussing, we get a feeling. But if we think that the SEMA exams is a technical exam, we will study E3, P3, F3. We can't pass SEMA exam. We need to force ourselves in this type of feeling. We need to force ourselves to write the answers for every type of question. You can't say that मेरे को ये आता नहीं। मैंने तो आपको बोला ही है कि 2 महीने for September, October, if you don't know something, you refer technical things you want, Google, Chat, GPT, my notes and everything, but you all are bound to write the answers. Practice in writing. Only reading will not be enough. Now we are going in non-financial for the first one. For the B751, the non-financial. What we will be writing in non-financial? Average return of the company is around 10%. Profit margin.
The profit margin of the company is around on 5,500, it is 10% approx. If you say return on capital employed, then it is around 12%. But here they are mentioning not a return on capital employed. They are saying profit margin which is comparatively with profit by sales. Hai? So for that reason I am not comparing this with 12%. Anywhere where the average return is less, then we should not go with the project, because it is actually going to impact the overall profit and overall performance of the company. That point we need to mention. However, on the same time, as you mentioned, that the company is eyeing on creating brand, image, its global impact, its global existence. From that angle, they can run the business. However, the number of flight and all they need to think. Maybe it would be a collaboration with any other company, or they can go by hub approach rather than point flight. Because in that hub approach, wherever there is a less profit, if they go by hub approach, that will help them to reduce the cost, and also it will less impact negatively in the overall profit. There are two things here. First thing, if we compare the return, then there is a concept called return on investment and residual income. A return on investment means if we assume that this 8% is on 5 million, suppose, and presently we are earning 12% on our capital. So this is giving in place of 12 only 8%. If we assume this is ROC, return on capital employed, return on investment. So we should not be doing this project because 12% to 8% is 50% lower. That's 40% lower. But then we don't know what is the company's cost of capital. If the cost of capital of the company say 5%, then ultimately by doing the project which is giving 8% is increasing our income. If the company has different divisions, departments, and in a particular department the return is 12%, and for that department we are considering a new project which will give 8%, then for the department it is not good. But for the company it is good if it is 5% cost of capital. So we can't comment here based on the return whether the project should be accepted or not, because we need to cover cost of capital also. The second thing, as you have said, the fourth route, that is I-100, which is international, we want to grow globally and all that. When we are an airline of a global standard, because in the global basis there are so many different requirements which we are not fulfilling when we are domestic airlines, that means that will help to improve our service to customers even at domestic level also. The second thing, like Indigo Airlines, earlier it was a domestic airlines, now it is a global airlines. Indigo is running their flights in different countries now, because they worked for, because in the international market in airline industry, I don't remember exactly, I don't know, but when you are initially you start an airline, you need to operate domestically only. And if you operate domestically successfully for 5 years, then only you will be given international license. Maybe that is 5 years, 7 years, we don't know. And every airline company want to cater at international customers. The international customers, the way we deal them, the way we provide the services are totally different than the domestic customers. There we need to have the different types of seats, the first class, the business class and all that. Otherwise they will not be satisfied. And the international flights are long flights, 4 hours, 5 hours, 6 hours, whereas the domestic flights are maximum how much? 2 hours, 2.5 hours, maximum 3 hours. So in the international flights, it's not purely no frill.
Some of the things you need to offer. So all the things are changing. But we want to do that for long-term gain. In the short run, maybe we are earning 8%. But there is a cause and effect relationship. No? Because of the international, your domestic operations will improve. You will be able to achieve your target. And strategic decisions means long-term only. So I am contradicting you in both the points. Whatever you are saying is also correct. Whatever I am saying is contradicting you is also correct. What is correct in the exam? Both are correct. कुछ wrong right नहीं है यहाँ. But since we have read both the requirements and the second part is focusing more and more on international travel and all that, थोड़ा सा अपने अंदर मन में बचा के रखेंगे कि यहां जाके लिखेंगे. बिकॉज अगर इसको भी वहीं लिख देंगे तो नीचे लिखने का कुछ मिलेगा नहीं. And then if we cover everything there only for the 4 routes, then the time also we will be applying huge. तो ये लिखने का टाइम ही नहीं बचेगा हम लोग के पास. That means in the exam, we have not managed the time, we have not performed properly, even though we know the answer, even though we were well prepared. But during the exam time, we are not performing properly. है ना? क्या लगता है भाई? There is no fixed answer. There is no fixed saying. For that reason, if there are 100 students writing answer, 100 students will be writing 100 answers. Everybody has their own style of writing English and all that. कोई wrong right नहीं है. कोई स्पेसिफिक राइट अप नहीं है कि ये फाइनेंशियल बेनिफिट से ये नहीं है. आपकी मर्जी है यार, जैसे आपको लिखना हो. सो हम लोग फिर से उसी डिस्कशन में आते हैं अब. व्हाट इज द नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ द फर्स्ट रूट? What is the non-financial benefits and drawbacks of the first route? क्या भाई? I said non-financial means thinking about customers, staff, process, system, innovation, development. Those are non-financial. So what you can write under non-financial, which is justified, which is logical, which is based on the company, which is based on the market, ये benefit है, ये disadvantage है. So you are talking about market, you are talking about customers. The customers are very high. Whether we will be able to attract those customers or not, that we don't know, because the competition is also very high. And anyhow, we don't have the experience of attracting so much the business customers. है ना? We don't have so much experience of business customers attracting, because we are not having first class, business class seats. We are no frill airlines. And the business customers generally travel in that class. So you will be writing relating to customers, a benefit and an advantage and disadvantage. Other than customer, can we write something else? Yes. The punctuality will not be accepted because it is written in the pre-scene, the diagram, that our punctuality has continuously reduced. गिरा गिरा गिरा. तो जो बिजनेस कस्टमर उसका तो मीटिंग है. सपोज आई एम गोइंग टू मुंबई टुडे एंड आई हैव अ मीटिंग एट 11 o'clock. आई टुक अ फ्लाइट विच विल बी टेकिंग मी टू मुंबई एट 10 o'clock. तो मैं 1 घंटा ट्रांजिट में लगाकर पहुंचने वाला हूं. मेरा मीटिंग ही फेल हो गया. अंडरस्टैंड? घूमने वाला तो आधा घंटा लेट में भी पहुंच जाएगा. But then, sir, punctuality and customer satisfaction are contradicting because customer satisfaction has increased in context to and punctuality has decreased. So the information itself is contradicting. You can write like that. Yeah. So you can say that the customer satisfaction is increasing. Reason being that the failures in reaching to destination are not very high. Because there is one more thing. What do you say? कहीं पर लिखा था ना ये लोग. Maybe in the write-up they have written
कि इतना ज्यादा हम लोग, माने फ्लाइट्स डिले नहीं होता है, हमारा फ्लाइट्स पहुंच जाता है. ऑन कॉम्परेटिव एनालिसिस फ्रॉम लास्ट 3 years वी आर परफॉर्मिंग बैड. The customer satisfaction may be for other factors also. Cost, economies of cost. You are able to take to the customer from one place to another because the customer is concerned with so many things. Customer is very demanding. What thing they are giving more priority? Maybe not punctuality. अब अगर घूमने जा रहे आधा घंटा फ्लाइट लेट हो गया, चलेगा यार, चलता है, क्या लगता है? So for that reason maybe it's contradictory. But then if you correlate the punctuality with the customer satisfaction then, but there are other factors which are not written. And those other factors are more important for the customers than the punctuality. And the punctuality may be delayed, but then the punctuality, what is they are saying? Percentage. No, that I can't say because suppose it is 79% we are reaching in time. Earlier we were reaching 82% in time. That means more and more flights are delayed. But still the customers are satisfied because of the other factors. Because of the innovation which we are doing, because of the sustainability, because of the carbon emission, because of the technology which we are using, because of our own flights, because of the, you can say, better service to the customers by our crew members or anything, because of the better management in the ground and all that. Point to point service, yes, so that they don't need to wait at different places. So you can't say that ki one thing, because one thing I understand in life, maybe one of the best organization of the world, there cannot be everything best in that organization. Maybe there are 10 factors. They are best in the 8 or 9 factors. One, still they will be missing. Because otherwise, then where the scope of improvement? Never we should say that I am the best. Because always there is a scope for improvement. Then in the second one, do we say the customer only or we will say something else relating to non-financial factor? Yes, Mr. Subham. Maybe low cost has, so maybe customer satisfaction will be more in that. Yes. Because they are getting the economically Yes. lower class there. Yeah. So you can understand that there are so many ways to write the answer. वो मैं बताना चाह रहा हूं आप लोग. You will say that, sir, I have written like this, they have written like this. अरे लिखने दो ना उनको यार. When you were writing as per the requirement, the question requirement are covered. You can't write exactly what I am saying. I can't write exactly what you are saying. Everybody has his own style. सबका अपना तरीका है कवर करने का, सोचने का, लिखने का, बताने का. बट सबको एक चीज ध्यान रखना है, पूरा आंसर लिखना है, एज पर रिक्वायरमेंट लिखना है, प्रॉपर लेंथ होना चाहिए, जो क्वेश्चन में पूछा गया है पूरे आंसर में कवर रहे प्रॉपरली. ये तो सभी को करना होगा ना. इफ वी आर डूइंग मिस्टेक लाइक दिस इन द एग्जाम, देन वी कांट पास. So in the second one, what can be the non-financial benefits and drawbacks we can mention? Can we say the operationals and supply chain system? Because we are already into this for the last 10 years. So our operations are effective relating to taking these types of customers or managing their system, giving them the proper feeling, getting this customer satisfaction. In this area, we are very good. But then the drawback, the problem with this, that here also the competition is medium. Here also, if because of the competition, maybe, suppose this is a new area and we are going to run the new flights, we are not able to manage the operations efficiently the way we are managing our existing operations, or maybe there is some, what do you say, dissatisfaction by the customers because of some factor, because of any operational factor, then in that case it will be affecting our operations in the existing area also.
in the existing routes also. Because अच्छा है सब, लेकिन गलती तो कुछ हो सकती है ना. कस्टमर के साथ कुछ बात हो जाए, कोई ऑपरेशन सप्लाई चेन ठीक से नहीं आए, ग्राउंड ठीक से नहीं हो, डेवलपिंग नेशन है तो ग्राउंड में मैनेजमेंट ठीक से ना हो. What when we are writing this, suppose whatever I am saying, it is covering commercial acumen automatically. Thinking about the organization, thinking about the environment, their external environment, giving logic, then why this is the drawback or benefit. वो commercial acumen तो अपने आप हो रहा है ना. We don't need to think कि हम commercial acumen cover कर रहे हैं क्या. अपने आप हो रहा है. When you are writing proper answer for the question, the professional marks you will be getting automatically. That is the free marks you are getting. आपको अलग से कॉमर्शियल एक्यूमेन एनालिसिस ये सब सोचने का जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप कवर होता है. इफ द स्टूडेंट इज राइटिंग द आंसर फॉर द क्वेश्चन प्रॉपरली, दे आर कवरिंग ऑल द प्रोफेशनल स्किल्स विच इज रिक्वायर्ड. डोंट हैव टू क्रैक योर ब्रेन की कॉमर्शियल एक्यूमेन क्या है, जरूरत ही नहीं. द लास्ट वन, व्हाट विल बी द नॉन financial benefits and disadvantage. Not the middle one, the third one, nahi, last one. In the international, non-financial, I will say more and more regulatory system, approvals. Because up till now we were operating in Hyundai. Now we will be going into international flights. The culture, the regulation, the laws, the approval. You can see that, as Surajit was saying, entering into contract with other airlines or maybe going into hub structure or something. The operations are totally different in in international airlines. Those operations, if we will be able to perform properly, manage efficiently, it will be improving our brand image even in the domestic level also. But if there is any problem that we are not able to manage, maybe in the beginning also, it will be affecting our domestic operations also. Because नया है ना हमारे लिए. मान लीजिए suppose I am teaching ACCA, CMA, if I want to start something new, which is not I am teaching for last 5-7 years, it's not a question that I know or don't know. It's a new thing. Maybe some challenges I will be facing, and definitely which may be affecting my existing operations also. ये सभी के साथ होता है. Maybe it's a luxury traveling area only where the people are going for traveling, but it's a hub area also where the business travel will also be there. So that will also be affecting our operations. जब आप इतना सोचेंगे, लिखने का बहुत मन करेगा, रोकिए अपने आप को. यू हैव 27-30 minutes ओनली, उतना में ही आपको कवर करना है. When you have written financial, yes, when you have written financial, non-financial for all the 4 routes, now do you want to recommend something that exactly what we should be doing? That any of the 4 we should be doing all 4, or we should be doing any one? Should we give any recommendation? Should we give any suggestion? क्या लगता है? Yes, sir. Based on the investment, the amount of fund we have is also a matter of fact to be considered here. So ultimately, if you are the analyst for this company and you are reporting to the board of directors, then what will be your suggestion? After explaining all the 4 routes, their financial, non-financial, benefits and gains, benefits and drawbacks, what is your ultimate suggestion to the board members? So it would be open with that I will station that it would be a total fund, and if we have the preference, or if we can leverage some of our surrounding
Sorry, sir. No problem, Surajit. Voice is not coming. No tension, cool. Now again, recommendation can be different ways. Suppose I want to recommend that we should be going for second one, D13 routes in the beginning, because that is gelling with our existing operations, the traveling, where the customers will be there for traveling to different places, not a business travel, and the investment is also low, margin is also good, so we should be going for that for the time being. Suppose somebody is advising that we should be going for I-100. Maybe the return is less, but it is just the short-term phenomenon. In the long run, when we will be operating our flights in the international level, then there will be effect, the, what do you say, the complementary effect on our existing domestic airlines also. And we will be able to have a brand, goodwill, image. For that reason, maybe initially we will be going for that. Obviously, there is a question that the investment required will be high. Suppose somebody will say that we should be going for first one, because in the first one we will be going for business travel, in which we don't have competency exactly, but then we need to we need to increase our horizon. We need to think about diversification. When we will be able to attract business customers, then we will be able to attract business customers in other routes also. So we should be going for that. The return is good, the investment is not very high. Or we can say that, मान लीजिए इस तीनों में से कुछ भी लिखना है. Ultimately you want to say that we need to go into further detail whether the projections relating to customers, relating to return, relating to investment are correct or not. That also we need to see, and we need to see how much funds we have, what funds we can arrange from some different places, what are the debt equity presently we have. Then we can decide which route or which combination of routes we can go. कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि यू नीड टू मेंशन मैं यही रूट में जाऊंगा, बिकॉज कोई फॉर्मूला थोड़ी नहीं यहां पर. जो भी आपको जस्टिफिकेशन रिकमेंडेशन देना है दीजिए, खत्म करिए उसको, फिनिश करिए. बिकॉज व्हेन यू गिव दैट रिकमेंडेशन, यस शुभम. In the briefing, the information was given that the airline industry was impacted by geopolitical events and terrorist attack and fuel prices, fluctuation in fuel prices. Can you refer those points in the answer? 100% you should refer. 100% you should refer. Why the pre-scene is given? Okay. So like fuel prices ke liye we can go for hedge or some forward contracts and other things. Those things we can write, sir, or? No. What do you want to write? But here what we want to cover, since they are asking the four routes, the different four routes, advantage, disadvantage, financial, non-financial, you have written. So now your last 3-4 lines is which route we should prefer. So how you want to correlate this route decision based on the fuel charges? You say how you will cover. What do you want to convey to the examiner or to the board of directors, I will say, not the examiner. How you want to correlate the fuel prices hike and all that by deciding which route you should be doing. How you will correlate this write-up. बोलिए सर. Mr. Subham, I think you are thinking something else and the question is something else. Because when you have already written all the advantage, disadvantage of four routes, now you need to write which route we should be selecting. You should help the board members in advance that this route according to me will be better. And for selecting any route we need to do this. That will be covering later. Whether you go for any route, fuel charges are high. That is the nature of this industry. As we discussed, there is no electric vehicle or electric airline which is invented, or there is no hydro vehicle. It is still running by crude oil, petrol, diesel, fuel and all that. Petrol, not diesel.
So fuel charges will be high. That means in every existing business of the airline, it will be going to be affected. That is not going to decide which route you will be going. Maybe something you can say that in international flights, when the traveling time is huge, then in that case, the fuel arrangement and all that is more required. And in international flights, maybe the chances are that the cost, the margin will be further lower because of the fluctuation in the fuel prices. But then the question comes that are we writing कि ये नहीं करना है, कि are we going to cover which route we should select? Think. If stats are given that there is 3 billion people transported in 2012 for global, and in Montreal alone it was 600 million. So हाँ. I mean that if we go global, there is a chance that we will increase our profitability and the market share as well if we select I-100. So that is not correlated with the fuel. Your suggestion is not, yeah. That is I am saying, when you are thinking about fuel, then it is going in a different direction what we need to cover in the answer. Because here the question is not relating to fuel charges are increasing. That is not correlated with which route you are selecting. You are suggesting we should be going global for that reason. What I was saying that if we are selecting global route like I-100, then geopolitics and terrorism will be a key point if you are considering going global. That you can write. But then what, do you want to recommend that we should be going global? Along with the global recommendation, you are covering that these are the risks we need to take into consideration. Yes, and how Yeah. to mitigate this. Yes. How to mitigate you cannot write, sir. Because that is no time available in the exam. You are just saying that for the board members, I am suggesting this we should be doing. But before taking decision relating to this, we should be considering these factors. That's all. Finish, sir. You don't have time. अभी तो क्लास में बहुत बोल सकते हैं सर. एक क्वेश्चन को डिस्कशन करने में हम लोग का 1.5 घंटा लग जा रहा है. सोचिए. So you think that how the time pressure will be on each of you when you will be giving exam. अभी तो हम लोग सब लोग डिस्कस कर रहे हैं तो बहुत कुछ बयान ख्याल आ रहा है, लेकिन जब अपने अकेले रहते हैं ना, ख्याल खुद ही को लाना है. दैट इज चैलेंज इन द एग्जाम. दैट इज चैलेंज. और ये ख्याल खुद से तभी आएगा जब आप बार बार ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे सर. आप ये नहीं सोचोगे अरे यार ये तो आंसर में ये लिख दिया इतना अरे भाई वो आंसर हम लोग जैसे 1.5 घंटा डिस्कस किए एंड नाउ वी ऑल राइट द आंसर. आई एम राइटिंग, यू ऑल आर राइटिंग, and we mix all the answers and then we come up with the final answer. वो इससे भी बढ़िया होगा जो मॉडल आंसर है, उससे भी बढ़िया. It will be far better than the model answer. But then why you are cursing yourself by looking at the model answer? I cannot write that much. Model answer is not written in 60 minutes. Model answer is not written by one person. Model answer written in 2-3 days by doing so much research, by covering so many person views and all that. Nobody can write the model answer. फिर तो कोई भी पास नहीं होएगा. ये एक जनरल डाउट है स्टूडेंट का. सर they have written this. Sir whatever they will write, you can't write sir. I cannot write. How you will write? मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं आपसे बढ़िया हूं, बट आप उससे कंपेयर इसलिए मत करिए कि वो बहुत ज्यादा. आप सोचिए कि आप क्या लिख सकते थे, क्या चीज और इंप्रूव कर सकती है. फोकस ऑन दैट. If you compare your answer with the model answer, it is not aligning with that. आप ये देखिए कि आप कुछ और लिखिए, मॉडल आंसर पूरा अलग है. आप उसको ध्यान दीजिए, उससे डरिए मत. That you can say the discussion on the first question. What to write and all that. How to write. How to apply the technical knowledge. How to build up the answer. How to analyze what they are exactly asking. हम लोग वो सब डिस्कस कर रहे थे. और पूरी बैच में 3 महीने हम ऐसे ही करने वाले हैं, यही डेली करने वाले हैं. मे बी सम टेक्निकल थिंग्स आर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क और व्हाट डू यू से, देयर आर डिफरेंट थिंग्स कमिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस. आई विल बी टेलिंग, डोंट वरी, मैं सब बताऊंगा. लेकिन मैं वैसे टेक्निकल स्टडी नहीं कराने जा रहा हूं, बिकॉज कोई मतलब नहीं है उसका. नो रेलेवेंस ऑफ दैट the way we are going to appear for the exam. पहला दिन से ही हम वहीं आ जाते हैं जो एग्जाम में करना है, हम उसको फॉलो करेंगे. Before proceeding to this point number B, do anybody has any specific query? Anything to ask?
Mr. Adavi, how are you feeling, sir? You must be doing Adavi this only, because that is your job in L&T, है ना? Yeah. Yes, sir. So it's a very simple exam. It's practical. No technical knowledge required. When you will be giving AFM, when you will be giving SBR, then the technical knowledge required. But while giving APM and SBL, technical knowledge not required. Sir, I have one question. Yes. While giving the answer, Huh. as we are all, most of us are working in organizations where we are doing all these things. Yes. We know it practically very well. Yes. Is it required to give the technical angle also in that so that we can get better marks or something like that? What do you think? Did I said this? No, What? I'm just asking you so that it will help us actually in giving the exam time, the Nice. approach. I'm saying that since the last class we are discussing this only, even today also, even at the end also. I said that somebody is writing balance scorecard, Fitzgerald and Moon model and all that. I'm not saying that person is wrong, because that covers the financial, non-financial aspects. But then the question is that, do we need to exactly write that कि जब ही आंसर मिलेगा नंबर मिलेगा? कुछ नहीं है. तो ना तो मेरे को फिट्जराल्ड एंड मुन मॉडल आज याद है, ना मैं आप लोग को याद करने बोल रहा हूं. Balance scorecard I remember, but if I write this answer based on the technical stuff, then I will not be able to write a good answer. As far as this question is concerned, sometimes some questions we find that, like suppose foreign exchange risk, then in that case some technical knowledge may be better. But not that you will be doing calculation of future options and everything. वो नहीं करना आपको, क्योंकि ये एग्जाम वो है ही नहीं ना. So technical knowledge is just 5 to 10%. Your E3, P3, F3 knowledge is just 5 to 10%. Whatever you are doing you have already given management case study. You know that the technical knowledge is very less. Same is the strategy case study. Same, sir. And sir, regarding this, the way we approach management case study, although the level is Slightly lower, yes, and this is higher. This is higher, but the approach should be. Yes, sir. Same, sir. Case study exam is case study exam. Got it. Thank you so much. No problem. Now, somebody was asking, Vinith was asking, do we need to write recommendation? So Vinith ji, when we studied in the last class, this is called report to the board of directors. क्या क्या चीज कवर करना है यहाँ? क्या है ये सर? ये क्या है सर? Mr. Vinith, when you are writing a report, then the conclusion recommendation should be there, because it's in short paragraph, 2-3 sentences. तो हम लोग बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन कोई 20-25 लाइन नहीं लिख रहे हैं, नहीं, टाइम भी नहीं है. जो यहां फॉर्मेट दिया हुआ है हम वो फॉलो करेंगे सर, बस. शुरू में जब यू आर प्रैक्टिसिंग राइटिंग आंसर, सब पहले फॉर्मेट को फिर से ध्यान दे लीजिए. क्या हेडिंग है, क्या लिखना है, सब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन, वेदर द कंक्लूजन, रिकमेंडेशन आर देयर और नॉट शुड बी कवर्ड. तो जो वो लोग बोला वो करेंगे सर. ठीक है सर, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, बिकॉज आप एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल लिख के ही टाइम ऑलरेडी सारा लगा चुके, टाइम बचा ही नहीं है आपके पास. बस 2 मिनट और, 1-2 मिनट में आप कुछ रिकमेंडेशन दे दीजिए. ये मत सोचिए रिकमेंडेशन ये सही है कि नहीं है. सही रॉन्ग कुछ नहीं होता है. नथिंग कॉल्ड रॉन्ग और राइट हियर. योर लॉजिक शुड बी देयर, द फॉर्मेट नीड टू बी मेंटेन्ड. तो आप रिकमेंडेशन देंगे तो यू आर कवरिंग द प्रोफेशनलिज्म, तो उसका मार्क्स मिलेगा आपको. यू नीड टू फॉलो ऑल द राइट अप वॉट एवर दे आर सेइंग. Then the second question. Preetham, what we discussed, कि you will be selecting any route and giving logic that we should be going for this route. But going for this route, you should be saying that we should take into consideration these factors.
Like somebody was saying that I will be writing international route we should be going because it will be improving our brand image, our customer base in the domestic also. But then the investment required is very high. Maybe there will be regulatory or cultural or whatever challenges we will be facing, so that we need to take into consideration. Ho gaya. You will be saying that we should be going for the first route because in the first route we will be targeting business travel customers. So by that we will be able to increase our horizon diversification because presently we are mainly dealing with the traveling customers only. So we will be targeting to them. But while taking this decision, we need to consider what are the exact requirement of those customers, what are the things they want, that is like first class or business class flights and all that. There will be changes in our operations required. जो भी आपको लिखना है आप उसको लिखकर बताएंगे कि ये चीज के लिए क्यों जाना है, नहीं जाना है. Anything you can write out of the 4 routes. Because you are giving recommendation out of the 4 routes after writing financial, non-financial benefits and disadvantage, that which route you are suggesting to the board members. And now your entire report will be read in the board meeting. They will be discussing, the board members will be discussing based on your report. The board members are discussing your report and then they are taking the correct decision. So you are not the decision maker, but you are helping the board members to take the correct decision and strategic decision. These are not 1 day, 2 day decisions. These are all going to affect the whole organization for whole life. So these are all strategic decisions. For that reason, we are saying we can go for international flights also, international route also. Otherwise, in the short run, the international routes will be creating problem only. Different types of issues, different culture, different things, regulatory and all, वो तो गड़बड़ाने ही वाला है. लेकिन हम तो लॉन्ग रन सोच रहे हैं ना, हम शॉर्ट रन 2, 4, 5, 6 महीने थोड़ी ना सोच रहे हैं. Then comes the second question is asking. क्लास के बाद रिकॉर्डिंग सबको करना है, नहीं तो अगेन यू विल बी आस्किंग द सेम थिंग विच इज इलॉजिकल. कितना देर में लिखना है, कितना लाइन लिखना है, टेक्निकल हमको जानना है कि नहीं. हम तो हर क्लास में बोल रहे हैं आपको, लेकिन आप सोचेंगे किताबी ज्ञान है. किताबी ज्ञान है ही नहीं ना यार. दिस इज नॉट बुकिश नॉलेज. वी ऑल आर रेडी फॉर दिस, जस्ट दैट वी नीड टू डिस्काउंट इन आवर ब्रेन. The second question is asking for briefing paper. Briefing paper to whom? For attention of. किसको attention कर रहा है? Subject. In a briefing paper, it is not asking you date and all that are not there. Then in the briefing paper, you will start with the introduction and then you will be writing in sentences, in paragraphs, different things. Whether you want to put bullets and all that, that's upon you. It is for attention of the subject and then start writing. That is briefing paper. यहां पर जब ये सारा लिखा हुआ है तो last day we discussed. There are many students who are just doing the class after Monday, straight away Friday. No single study done. And there are many who have studied. So if you don't study regularly, then why we have said that every day 2 hours study? You will say that I didn't get time in the office. Then तो सब कहानी खत्म होने वाला है. आपको तो अगर मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे गया पढ़ाई करना है ना, मंडे फ्राइडे मत पढ़िए. When today I have taken your time, then don't study Mondays, Friday self study. But on Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday, Sunday, you need to study self na. Regular study is a must. No shortcut sir. अब कोई गॉड गिफ्टेड है, उसको सब ये ऐसे ही आता है. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन की स्टडी एग्जाम्स आर गॉड गिफ्टेड. उनको कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं, दे आर ऑलरेडी रेडी. दैट हैपेंस आउट ऑफ 100, 4 to 5 स्टूडेंट्स. बट उसके अलावा बैलेंस में तो ये कला नहीं है ना. वो केवल सोच रहे हैं बाय डिस्कशन वी कांट पास दिस एग्जाम, वी नीड टू स्टडी ऑन आवर ओन. इट्स नॉट दैट व्हेन इट्स डन इट्स डन. अब जब क्लास हो जाएगी तो आपको इसका आंसर अब लिखना है. अब दिखाने का जरूरत नहीं है, दिखाएंगे क्या? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. You read the model answer which is written in the answer, in the sheet already written, model answer. Not written by me, shared by the institute.
आप मॉडल आंसर से डरेंगे नहीं. दैट मॉडल आंसर इज 5 times more than what you can write in the exam. But it is giving you a 360-degree view. These are the points which can be covered. And still institute is saying that I am not accepting challenge from anybody that the answer is right or wrong. There are many other things which is not written in the model answer can be given marks. उतना लिख रहा है वो लोग तो, वो भी लिखता है. सोचिए, when we are required to write 45 lines, they have written 200 lines. And still they are saying that there can be other things also. You need to understand this. तो ब्रीफिंग पेपर का राइट अप स्टार्ट कैसे होएगा? ओपनिंग लाइंस. रिमेंबर दोज ओपनिंग लाइंस. मे बी यू डोंट रिमेंबर वाइल राइटिंग द आंसर. आप इसको ध्यान दीजिए. When 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 times you will follow this, automatically it becomes bread and butter for you. Now in the exam you don't need to follow, it becomes a nature. But अगर अभी ठीक से नहीं पढ़ेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो एट द टाइम ऑफ एग्जाम कुछ भी नहीं आता है. ना फॉर्मेट आता है, ना कैसे लिखें, ना टाइम मैनेजमेंट है, ना कुछ सोचने का तरीका है. बस क्लास किए थे, कभी लाइव कभी रिकॉर्डेड, एंड नॉट प्रिपेयर्ड प्रॉपरली, तो कैसे पास होंगे? एंड इट विल नॉट डिसाइड दैट ऑन द डे ऑफ एग्जाम, ऑन द डे ऑफ रिजल्ट, स्टूडेंट विल पास और नॉट. इट विल बी डिसाइडेड इन 2 months ओनली. पहले ही पता चल जाएगा. सब लोग को सीरियस होना पड़ेगा. If you are having less time, you need to bring out some time to study. Not possible, sir. Understand. Everybody. तो यहां पर ब्रीफिंग पेपर के लिए, दिस ब्रीफिंग पेपर आइडेंटिफाइज द बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टिंग लाइन फॉर अ ब्रीफिंग पेपर. दिस रिपोर्ट एड्रेसेस. ये लिखने से ये लोग बोल रहे तुरंत एग्जामिनर अच्छे से मार्क्स देता है, आपको अच्छे मार्क्स मिलने लगते हैं. In summary, the directors need to be aware of. When you are giving recommendation, you can write that in summary, the directors before taking this decision should be aware of. ये lines को use करिए अपना आंसर में. Because examiner are saying that. I am not saying by this is written by examiner. The opening and closing lines of your answer are particularly important. The first sentence makes the first impression on the marker, and the last sentence will be the freshest in the marker's memory. Hence are some examples from previous ACC exams of opening and closing lines that could be adopted to specific circumstances. मैंने नहीं लिखा है, इंस्टीट्यूट ने लिखा है. तो इंस्टीट्यूट का तो बात मानेंगे ना कि स्टार्टिंग और एंडिंग कैसे होना चाहिए. नहीं याद है, करिए. 1-2 लाइन आप पूरा याद करने का सोचते हैं टेक्निकल, 1-2 चीज तो ध्यान देंगे ना. द फॉर्मेट. कोई भी नोट्स आपको जो बना के दिया गया है, ऐसे ही नहीं, जबरदस्ती नहीं, ऑल आर रेलेवेंट. आफ्टर द क्लास डू द रिकॉर्डिंग्स, देन नेक्स्ट डे रीड द नोट्स, देन नेक्स्ट डे राइट अप whatever we have discussed, writing, then compare with the model answers. ये करना होगा, यही है ये. So what is the second question? Prepare a briefing note for the chief executive that evaluates the key risk Corejet must consider in relation to becoming a global airline. What are the risks we need to consider that need to be covered in the briefing note? You just you cannot mention only the risk, because the word is evaluate. Evaluate मतलब risk है, उसको manage कैसे करेंगे? What is the risk and what is the process by which we can manage? If we go for global airline, अगर हम लोग ग्लोबल वाले ऑप्शन में जाते हैं तो क्या रिस्क अलग से अराइज होगा और उसको मैनेज कैसे करेंगे, आपको ब्रीफिंग नोट में कवर करना है. अगेन फर्स्ट विल बी इंट्रोडक्शन एंड ब्रीफिंग नोट फॉर अटेंशन ऑफ सब्जेक्ट. ठीक है, हो गया. देन उसके बाद आया मेरे ख्याल से 5 पॉइंट, 5 पॉइंट्स. दिस इज द रिस्क, हाउ वी विल मैनेज. दिस इज द रिस्क, हाउ वी विल मैनेज. दिस इज द रिस्क, हाउ वी विल मैनेज. You are going to take around 20 minutes or maybe around 18 minutes. So the length of the answer, 30 lines. 25 to 30 lines. In how much time? 20 minutes. So if you are writing 5 points, every points will be a 4 to 5 lines. So 5 into 4 or maybe 6, 7 lines. So it will be coming around 25 to 30 lines.
आप बोलेंगे सर मैं 5 पॉइंट से ज्यादा लिखूंगा, लाइक वी हैव द हैबिट राइटिंग 20 पॉइंट्स, you will not be getting good marks. Because if you are writing 20 points, you are not explaining a single point properly, even the marks will be less. The institute is saying that for each point they are giving you 2 to 3 marks. तो आपको पॉइंट्स ज्यादा लिखने में ध्यान नहीं देना है, जो पॉइंट्स लिखेंगे अच्छे से लिखना है, समझाना है, बहुत ज्यादा लाइन में नहीं, 10, तब तो आप लिखेंगे कैसे, टाइम विल नॉट बी देयर. आपको उसको प्रॉपर टाइम में लिखना है. somebody has good speed of typing, they can type without looking at the keyboard, maybe they can write more, but examiner is not saying that you need to write 500 lines. वो लोगों ने बोला है the speed should be 15 to 20 words per minute. 15 to 20 words means around 1.5 line per minute. ये मैं उनका ही बोल रहा हूं, मैं अपने घर से नहीं बनाया हूं. So it's not that you need to be very speedy in typing the answers, but you need to follow their guidelines, जो हम लोग को फॉलो करना है. आप एक बात सोचिए, अभी हम लोग यहां पहुंच चुके हैं कि everybody in the class must be feeling sir we can cover this risk. कोई के मन में ऐसा नहीं आ रहा है कि we can't write this risk, सबके मन में आ रहा है, क्योंकि हम इतना बढ़िया से उसको डिस्कस कर रहे हैं. मैं नहीं कर रहा, हम उसके ऊपर टाइम दे रहे हैं. आपको एग्जाम में यही टाइम को बचाना और ऐसे लिखना है. यू अंडरस्टैंड? बिकॉज इन द एग्जाम यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड अदर्स, you need to make yourself understand. Focus. टाइम रीडिंग कम लगाना है, फटाफट रीड करना है. सो जब एग्जिबिट 2 रीड करेंगे, आपको वहां से सोचना है नाउ आई एम रीडिंग एग्जिबिट 2, रिक्वायरमेंट एंड राइटिंग द आंसर. 60 मिनट्स आई हैव, मेरे पास 60 मिनट्स है. एग्जिबिट 2 को मैं पढ़ूंगा, रिक्वायरमेंट पढ़ूंगा, जो आंसर से लिखूंगा पूरा 60 मिनट्स के अंदर, तब तो प्रैक्टिस होगा ना. But if you are not doing it, then तो very bad. And if you are doing it in 3 hours, that is also bad. हर बार वैसे ही परफॉर्म करिए जैसे एग्जाम में करना है, from the first class. Believe me. Now, we can write regulatory risk. We can write cultural risk. We can write economical risk. We can write operational risk. We can write financial risk. We can write supply chain risk. बोलेगा ये रिस्क क्या होता है? टेक्निकल में जाते. कोई भी बिजनेस अगर हम लोग कर रहे हैं, अगर कोई अपॉर्चुनिटी वी आर गेटिंग, बट वेदर वी विल बी एबल टू कैपिटलाइज ऑन द अपॉर्चुनिटी और नॉट इज अ रिस्क. कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कुछ थ्रेट्स आ गया, कोई रेगुलेटरी प्रेशर आ गया, कोई बिजनेस में टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, हम उसके लिए रेडी नहीं हैं, दैट इज कॉल्ड रिस्क. या कोई इकोनॉमी में चेंजेस आ गया, कोई पॉलिटिकल चेंजेस आ गया, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ऑपरेशन इश्यूज, कल्चर, रेगुलेशन, पावर, पॉलिटिक्स, environment, external environment, maybe relating to pollution or anything. हर चीज तो हर बिजनेस में हो रहा है, हम लोग उनको बोलते हैं रिस्क. टेक्निकल वे में हर तरह का रिस्क फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एवरी प्रोजेक्ट, फॉर एवरी सिचुएशन इज नॉट रेलेवेंट. देयर आर सम इंपॉर्टेंट रिस्क, बिकॉज इन एवरी बिजनेस देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रिस्क. रिस्क है तो इश्क है, रिस्क होगा तभी तो इश्क होगा ना. बिजनेस करेंगे तो रिस्क तो होएगा ही. But you need to identify which are the important risks and why these risks are there, what the problem may arise, what issues will arise, how I will be able to handle those issues and all that. That is called risk management. That is called risk management. For risk management in the companies, there is a committee called risk committee, or maybe a risk management department. What is the job of the risk committee of risk management department? Making a risk register. In all the bigger organizations of the world, there is a risk register. That risk register will mention all the risk in the organization. Like asset register, shareholder register. Similarly, in the organization, there are risk register. That risk register mention all the risk by the organization, explain them,
what is the kind of risk is, how we have managed, what is the process we have followed to manage the risk, who is responsible for managing this risk, when we evaluated this risk in the past, what is the further risk is still available. For every risk, these explanations should be there, which is called a proper maintenance of risk register. This risk register is getting updated on regular basis. कोई रिस्क पहले नहीं था, नया आ गया, कोई रिस्क पहले था और बढ़ गया, कोई रिस्क पहले से कम हो गया, कोई रिस्क अब नहीं है, उसको हटाना है. For that, the board of directors meet on regular basis for risk management, for identifying the risk, for managing the risk. बचपन में आपने कभी पढ़ा होगा, risk management will be possible by a technique called TARA. Transfer, accept, reduce, avoid. Transfer, accept, reduce, avoid. Transfer, accept, reduce, avoid. TARA. Transfer means you will transfer your risk to somebody else, to other organization, to an insurance company. Accept means you are accepting that risk. You have to accept that risk in the business. Reduce means the probability of arising that risk you are reducing. Avoid means you don't want to take that risk. You can't take. You don't have the capacity to take that risk. So first of all, you will be having a risk register, a risk management cell, which will be identifying the risk, managing the risk and all that. You will be identifying the risk into order. This is very important, less important, less important, less important. In every situation, different risks are there. When the important risk you are able to manage by TARA, these need to be transferred, these not need to be taken, this is reduced, then in that case you are doing a risk management properly in the organization. Gone are the days when the risk management was when the risk will arise, then you will manage. That days are gone. We need to be proactive. We need to be ready for anything which risk will arise and how we are going to manage. Risk management is not a one-day affair. Risk management is not a one-person job. Risk management is everybody involved in the business. For risk management, we don't need to do anything extra. Whatever we are doing, if we do it properly, if we follow the instructions, if we do it in a right direction, then the risk will automatically will not arise. And if it will arise, it will be managed also. Risk is not only loss. Risk means gain also. But the gain, whether it will be arising that gain or less gain or more gain. Because no risk, no gain. That is written technically in your material, risk. नहीं पढ़ना है खोल के, नहीं जाना है वहां. लिख दिया बुक के अंदर 20 पेज, the different types of risk, economic risk, employee malfeasance risk, operational risk, strategic risk. भाई yes, हम लोग को आता है. सूरज माने I mean to say somebody was asking कि मेरे को आप टेक्निकल P3 पढ़ते रहिए, कोई काम नहीं है सर, कोई काम नहीं. बिकॉज ये केस स्टडी किसके बारे में है, कंपनी क्या है, क्या सिचुएशन दिया है, उसके बेसिस पर सोचना है ना. आपका कॉमन सेंस थोड़ी ना चलेगा यहां. कौन बोला आपको टारा लगाना है? जबरदस्ती है क्या टारा लगाना है? Who said that I need to write the answers by writing TARA only? Nothing like that. ऐसा कुछ थोड़ी ना है. एक बार आपको पढ़ने का मन है, आप कापलान खोले, मेरा नोट्स खोले, गूगल खोले, आप रिस्क एक बार टाइप पढ़ लिए, थोड़ा टारा पढ़ लिए, ठीक है. बट उसका यूसेज 1-to-1 आंसर लिखने में नहीं है. There is nothing the examiner are saying that you need to write TARA only to manage the risk. और यहां पर तो वैसे भी मेरे को नहीं लग रहा काम आ रहा है. यहां तो बोल रहा है इन एन इंटरनेशनल एयरलाइन जब हम लोग चालू करेंगे, ग्लोबल एयरलाइन, तो क्या टाइप के रिस्क अराइज होंगे और हम उसको मैनेज कैसे करेंगे. अब यहां पर अगर हम लोग बोलते हैं ऑपरेशनल रिस्क, प्रेजेंटली वी आर ऑपरेटिंग इन हुंडई. So all the operations, the legal formalities, the arrangement of staff, supply chain, we are managing on local basis or Hyundai basis. But in the international level, these will be at a different level. The ground management, the approval from the government and so many things. Those day-to-day operations need to be managed at global level. Those management will be difficult than the national level, than the domestic level. For that, maybe we need to enter into new contracts. Maybe as Surojit was saying that we need to contract with a bigger airlines for hub management.
maybe we need to take money. There are so many organizations which provide different types of services. एयरलाइन कंपनी अकेले थोड़ी ना चल रहा है, उसको तो अलग अलग जगह से सर्विसेज मिल रहा है. फॉर ग्राउंड मैनेजमेंट, फॉर एनीथिंग, यू कैन हायर सम अदर ऑर्गेनाइजेशन एट द बिगिनिंग to manage that risk, or maybe you will train the staff to operate effectively during for giving the customer satisfaction, because in the international airlines those customer satisfaction is more important than as compared to domestic airlines. आप ऑपरेशनल रिस्क को लिख रहे हैं, कोई लिख रहा है लीगल रिस्क को, कोई रेगुलेटरी रिस्क को लिख रहा है, कोई लिख रहा है कि ये जो एयरलाइन है जहां पर हम लोग जाने वाले, इन्होंने बोला ना कि वो अलग क्लाइमेट है, क्लाइमेट रिस्क, नेचुरल रिस्क है, उस क्लाइमेट के लिए कैसा एयरलाइन होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए. देन इन दैट केस वी कैन से फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, बिकॉज इन द अदर कंट्रीज we will be getting the foreign currency inflows, we will be expanding in the foreign currency, then the foreign exchange risk arises, because of the changes in the foreign exchange rate affect on our operations. Maybe because of that we will be doing some hedging or forward contract, or maybe doing some, because you need to write different types of risk which you were not facing earlier, and how you are going to manage those risks now. 5 पॉइंट लिखना मेरे हिसाब से जरूरी है. 5 पॉइंट में 30 लाइन, यानी कि 6 लाइन्स पर पॉइंट, एंड एवरी पॉइंट व्हाट इज द रिस्क, हाउ इट इज गोइंग टू अराइज, हाउ वी विल मैनेज, वो पॉइंट आपको कवर करना है. आपने रिस्क को एक्सप्लेन किया, आपने बताया कि भाई रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे. मे बी आपका मैनेजमेंट तरीका मेरे से अलग है. यू आर सेइंग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क वी विल मैनेज इंटरनली बाय डूइंग हेज, माने बाय डूइंग यू कैन से इनवाइसिंग और समथिंग. I am writing foreign exchange risk we will be doing by forward contract. चलेगा, क्या प्रॉब्लम है? मेरी मर्जी में कैसे बोलूं? मैनेजिंग द रिस्क कोई एक तरीका थोड़ी ना है, हजारों तरीके उस रिस्क को मैनेज करने की. द वे यू फील कंफर्टेबल यू नीड टू राइट, ये रिस्क है, ये ऐसे अराइज होगा और इसको ऐसे मैनेज करना है. इन अ ब्रीफिंग नोट यू आर गिविंग टू योर सीईओ ऑफ कॉडजेड, सब्जेक्ट दिस, the briefing note ऊपर heading, and then you will be writing introduction, and then you will be writing 5 points for the risk and how we are going to manage that risk. कोई टेक्निकलिटी जरूरत नहीं है. रिस्क, कोई बोलेगा रिस्क क्या है यार? रिस्क मतलब बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, रिस्क में कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, हम उसको अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज नहीं कर पाए, कोई दूसरा कर दिया, कुछ भी हो सकता है ना यार. थोड़ी ना रिस्क मतलब खराबी होता है. सारा चीज आपके ऊपर है कि आपको रिस्क के अंदर क्या चीज डालना है और उसको मैनेज कैसे करना है. दैट इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट. कभी कभी द क्वेश्चंस विल बी आस्किंग, नॉट दिस वन, कभी कभी द क्वेश्चंस विल बी आस्किंग गिविंग सम flaws in the situation of the company relating to risk management. They don't have a cell, they don't have a department, they are not doing that, they are this that. तो आपको थोड़ा उसको फोकस करना पड़ेगा. यहां पर वैसा नहीं है. इन द प्री सीन they have given about information, और यहां भी उन्होंने बोला नहीं कि कंपनी इज नॉट डूइंग दिस, जस्ट दैट इट इज एन इंटरनेशनल ग्लोबल फ्लाइट. हमने पहले किया नहीं है, बस वही एक है कि नया रेगुलेशन आएगा, नए कल्चर से मिलना होएगा, नया भाषा समझना होएगा, ऑपरेशंस में ध्यान देना होएगा, देन यू कैन से फॉरेन एक्सचेंज रिस्क अराइज होएगा, क्लाइमेट रिस्क अराइज होएगा, बिकॉज उसका क्लाइमेट हमारा क्लाइमेट अलग है, तो उससे मैनेज करना पड़ेगा. कैसा एयरप्लेन होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, दैट वी नीड टू चेक. दैट इज रिस्क एंड द मैनेजमेंट ऑफ दोज रिस्क. नाउ when you see the model answer for the first one, that is the board of directors report, the model answer to the board of directors business analyst September 23, evaluation of new routes. You can write in place of evaluation, you can write financial, non-financial benefits and drawbacks of new routes. ठीक है, वो अपने ऊपर है, बट फॉर्मेट मेंटेन किए. फिर इंट्रोडक्शन. अब इंट्रोडक्शन को आपको अंडरलाइन करके बुलेट पॉइंट देना यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है. क्वेश्चन ये है कि इंट्रोडक्शन होना चाहिए. यू विल से सर दिस इज ह्यूज, सर दिस इज रिटन इन 20 फॉन्ट साइज फॉर अ बेटर विजिबिलिटी इन द क्लास. व्हेन यू मेक इट इज 11 फॉन्ट साइज, बिकॉज इन एग्जाम 11 फॉन्ट साइज, तो ये 3 ही लाइन 4 लाइन आएगा. 11 फॉन्ट साइज में वी नीड टू टाइप 1.5 लाइन.
दिस इज नॉट 11 फॉन्ट साइज आई एम यूजिंग, ठीक है। यहां पर ये 16 है, कहीं पर मैंने 20 लिया है आपकी विजिबिलिटी को बेटर बनाने के लिए, बट दिस मच विड्थ माने आई मीन टू से फॉन्ट साइज वी कांट यूज इन एग्जाम। बट फिर भी ये मॉडल आंसर मैंने नहीं लिखा, इंस्टीट्यूट ने लिख कर दिया, बहुत लेंदी है, बहुत सब कुछ लिख दिया, सारा सागर। डोंट गेट कंफ्यूज कि मेरे को भी इतना लिखना है। नोबडी कैन राइट, हु विल राइट, नोबडी कैन राइट। यू आर नॉट गेटिंग 5 hours टू राइट द आंसर। Sea has solidified its preparation as a leading low airline in Hyundai. Its no-frill approach and commitment to process automation have endeared it to a significant segment of the market. As the airline seeks to expand, it's imperative that the new routes align seamlessly with its core brand values and operational strategies. This report aims to analyze the financial and non-financial implications of the potential new routes. अगर आप ये बात इंट्रोडक्शन में नहीं लिखते हैं, आपका इंट्रोडक्शन का कोई वैल्यू ही नहीं है। आप इसको जितना भी लिख दीजिए, अगर ये नहीं लिखते इसका मतलब यू हैव नॉट अंडरस्टूड द रिक्वायरमेंट एट ऑल, यानी कि आपका आंसर खराब जाने वाला है, आप क्वेश्चन को ही नहीं समझे। इंट्रोडक्शन में ये लिखना जरूरी है व्हाट यू आर गोइंग टू कवर। पहला रूट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, द प्रोजेक्टेड वॉल्यूम 80,000 मंथली पैसेंजर्स presents a robust revenue stream aligning with the Cord's low cost, high value model. The 10% expected profit margin align with the company's most recent profit before tax percentage compared to its revenue. This route's ability to cater to such volume efficiently along with the profit margin position, it's a strong content for boosting Cord's bottom line. यानी कि ये फाइनेंशियल एडवांटेज हो गया। This route would bring an estimated 9,60,000, 80,000 into 12 additional passengers per year, which represents just over 1% of the annual passengers. Based on a market share of 14% and 600 million passengers in Hyundai, although this is only an increase of 1%, the route itself represents an increase of around 0.1% of the number of routes available to Codge, which suggests a good economy. ये चीज को लिखने के लिए प्री सीन इंफॉर्मेशन बहुत बढ़िया से होना चाहिए। सॉरी, इफ द प्री सीन इंफॉर्मेशन इज नॉट देयर यू कांट राइट दिस। नहीं याद है, ठीक है यार, चलिए कोई बात नहीं है। प्राइस सेंसिटिव मार्केट इन द रिल्म ऑफ लो कॉस्ट कैरियर्स, हाई कॉम्पिटिशन ऑफन पार्टिसिपेट्स फेयर वॉर्स। Given the high level of competition on this route, revenue stream may face volatility. A $2 million upfront investment could elongate the break-even point if the fare were significantly diminished margin. Brand expansion, establishing a strong presence between two business hubs, not only increases Codge visibility but also could lure business travelers who might prefer a budget-friendly yet efficient option for their frequent travels. अब इसमें से आप बोलेंगे you can say this is non-financial. This may be non-financial, financial both. And this is, you can see, financial, economy, profit and all that. Even the below part, this is, you can see, non-financial also. Examiner इसके ऊपर आपको financial, non-financial एक रूट के ऊपर 4 नंबर देने वाला है। ये 4 नंबर से ज्यादा लिखा हुआ है, 3 पॉइंट लिखने का जरूरत नहीं है, 2 ही लिखने का जरूरत है। They are writing extra. The second one, attractive financial prospects. Compared to B751, this route has a higher margin, a lower upfront investment, and also has a medium competitor presence. B is an additional 7,20,000, 60,000 into 12 per year. This route will most likely bring greater financial return. Seasonality. Routes that cater predominantly to tourists can experience significant seasonal problems. Peak season can see high volume Durga Puja, Happy New Year. Off-peak season witness reduced passengers, potentially impacting the overall profitability of the route. This variability requires nimble operational strategies to manage. यानी कि less season में कमती flights और ज़्यादा flights. Strengthening core demographics. This route can further solidify Codge foothold in the leisure travel market. With a connection to an up and coming tourism destination, there lies an opportunity to collaborate with resorts and travel agencies. हम लोगों करते तो नहीं है लेकिन कर सकते हैं.
Infrastructure consideration. Emerging tourist spots, especially in developing regions, might not be close to high quality airport facilities. This can pose challenges to the terms of logistics, turnaround times, customer experience. Corejet outsource all of these airport handling this. मान लीजिए आपको इंडस्ट्री देता है कि बहुत सारा इंडस्ट्री मैंने क्लासेस में कराया है जिसके अंदर इट्स अ ट्रेवल इन कंपनी, इट्स नॉट अ एयरलाइन कंपनी, इट्स अ ट्रेवल कंपनी. तो ये ट्रेवल कंपनी का भी केस स्टडी हो सकता है. कौन सा होगा किसको मालूम है यार. प्रीसीन इंफॉर्मेशन आने से ही तो पता चलेगा. अभी तो आप ओपन एंडेड हैं, अभी तो ऐसे ही हम प्रीवियस टर्म का पेपर कर रहे हैं. देन दिस, आई एम नॉट रीडिंग दिस वन, यू ऑल कैन रीड. ज्यादा लिखा हुआ है, ऑब्वियसली इतना नहीं लिखना है, एग्जाम में टाइम ही नहीं है यार. आप अगर इन सबको जोड़ेंगे 200 लाइन का आंसर है. एंड द टाइम यू विल बी गेटिंग 45-50 मिनट्स, माने 50 लाइन्स. 4 गुना आंसर लिखा हुआ है. ठीक है. नॉट फॉर दैट यू कैन राइट एवरी पॉइंट. इफ यू आर नॉट एबल टू थिंक समथिंग, देन थिंक अलोंग दोज लाइन्स. बट बात क्या बताया जा रहा है कि कोई भी रूट में क्या फायदा नुकसान होएगा. जस्ट दैट इन रिकमेंडेशन व्हाट दे आर सेइंग. After an analysis of the potential routes, the D13 route emerges as the most suitable strategic choice for Korj expansion. Connecting a major city in Korland to a budding tourist destination in Hundrei aligns perfectly with our current culture. Primary target market. The route promises a substantial 12% and investment will be 1.5 only. The D13 route offers a balance between passenger volume profitability without the intense competition. While each prospect route presents unique merits, D13 stands out synergistic with our core strengths and business model. This choice not only strengthens its foothold in the leisure travel sector, but also paves the way for the further brand enhancement and financial success. आपको कुछ और लिखना है, कुछ और लिखिए, कौन मना किया यार. The second one, the risk for attention of the chief executive of Korj. गलत लिखा है मैंने. Korj. Then the key risk in becoming a global airline, because this is a briefing paper, बस इतना ही उसका होता है. ब्रीफिंग पेपर हर बार आपको देखना है कौन से जगह क्या फॉर्मेट है. 2 बार 3 बार देखेंगे ध्यान रहेगा. मे बी यू डोंट रिमेंबर. एज कॉर्ज, कॉर्जेट, as Corejet, becoming a global airline, expanding beyond Hundrei to the continuity of Numbia, we must address several key risks that come with operating on an international scale. While our robust track record in Hundrei serves as a strong foundation, the diverse and expansive environment of Numidia presents a new set of challenges. The following briefing outlines these risks. अगर आप ये नहीं लिखते हैं कि ये है तो इसका मतलब आप आंसर गलत लिखने वाले हैं. You are writing a wrong answer because you have not understood the requirement. Regulatory and compliance risk. Every continent being made up of different countries with different histories, culture, languages is likely to have unique aviation regulation influenced by its socio-culture, economic, geographical factors. Navigating through Hundrei, Korje has demonstrated proficiency in maneuvering through varied regulations. However unique, unlike Hundrei, Namibia is not brought together in a single trading bloc. Each country within Namibia will be developing or maybe developed, could introduce a different set of rules ranging from safety protocols to crew management. These unfamiliar or potential more stringent regulations can lead to operational challenges. It's imperative that C company, local regulatory experts, or consider hiring consultants in target countries in Namibia for a smoother transition. A dedicated regulatory team must also streamline the process, ensuring that Korj remain compliant without hindering its operational efficiency. Operational and logistic challenges. Operating on a larger global scale, especially in continent as diverse, can introduce multiple logistic challenges. These can range from ensuring the aircraft are prepared for longer flights to manage more integrated global supply chain and international disruption. Supply chain issues to delayed flights can not only affect profitability but might also tarnish Korj's
hard earned brand in the local nation, investing in thorough route feasibility studies, fortifying codes, supply chain, then possibly through local partnership will help ensure these airlines can exercise these cultural and customer preferences. Namibia, with its unique culture landscape and have passengers preference distinct from Codes, is accustomed to in this. A potential misalignment with these expectations could lead to decreased customer loyalty and market penetration more challenging. Therefore, existing market research coupled with the engagement with local branding and cultural experts is crucial. Region-specific amenities on board services tailored based on these research can resonate better. Economic volatility and geopolitical sensitivity. With its mix of developing and developing nations, Namibia economic landscape might be more volatile. An economic downturn in specific region can significantly impact geopolitical tensions or changes, introduce unexpected optional hurdles. Diversifying codes routes within Namibia can help spread out this risk, ensuring a balanced approach. Additionally, close monitoring, increase competition and market entry barriers. अब ग्लोबल में तो ग्लोबल लोगों से compete करना है. Quads will face competition from established players in the target market, some with a strong hold. C, growth will be limited by challenges establishing brands amidst practicing wars and other barriers. Seeking a strategic alliance, no problem. Coupled with the targeted marketing campaign and customer loyalty, you can just wait for 5 minutes. Just 5 minutes. Conclusion लिखा हुआ है, ठीक है. Obviously, जितना लिख सकते हैं उससे ज्यादा लिखा हुआ है. Model answers are always more than what you can write in the exam because they are not following exact time. मेरे ख्याल से ऐसा होना नहीं चाहिए, but सब इंस्टीट्यूट यही करता है. सीमा इंस्टीट्यूट, ECC इंस्टीट्यूट, every institute writes something, whether you go for CA exam, more than what you can write. And even the language. If you ask me, my English is not that much literature type. इतना सुंदर इंग्लिश तो हम लिख नहीं सकते, हम अपनी बात कर रहे हैं. So I will not be able to write this English, but this is not an English literature exam. Somebody may be thinking like me, not convent educated, English उतना बढ़िया नहीं है, तेल लेने गया. No concern. This is not an English literature exam. You need to write your thing in your own words. आपको जैसे फीलिंग आता लिखना है. स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक से प्रॉब्लम नहीं है. स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक होने से चलेगा, बस समझ में आना चाहिए. Because the software will not automatically rectify the spelling or grammar. बट मैं तो यहां पर स्पेलिंग ग्रामर रेक्टिफाई कर सकता हूं वर्ड फाइल में अपने आप. बट इन द एग्जाम यू कांट डू दैट. सो डोंट टेक टेंशन रिलेटिंग टू दैट. टेंस रिलेटिंग टू, you need to write like this. You need to manage your time. You need to understand the question. On the basis of this question, what are the technical coverage we have done? Suppose I will say balance scorecard. Then we can say risk. आप बोलेंगे इसके लिए क्या करना है. बैलेंस स्कोर कार्ड और रिस्क एक बार आप रीड कर लेंगे. मैंने अभी इसमें लिखा नहीं है, मैं बैलेंस स्कोर कार्ड और रिस्क इसके नीचे डाल दूंगा, बट उसको इस तरह से नहीं लिखी. यू नीड टू रिमेंबर द वर्ड्स लाइक लास्ट बैच APM when we were taking the last class, somebody was saying that sir I don't able to remember the advantage disadvantage which we read in the balance scorecard. आप जन्म में नहीं याद कर पाएंगे, मैं नहीं याद कर पाया, आप कहां से करेंगे. Don't read like that. Don't try to mug up balance scorecard, advantage, disadvantage and all that. नहीं हो सकता वैसे. ऊपर में जो लिखा मैंने कि स्टार्टिंग सेंटेंस उतना ही याद कर लो ना यार, वही ध्यान दे लो. ये सबको याद नहीं करना है, एक बार रीड मार लेंगे. Just BSc and risk once read so that at least 1 or 2% technically you are ready. But उतना ज्यादा उसका यूज आप ये मत करना पड़ेंगे ही नहीं. अब मैं नोट्स पे नोट्स बनाए जा रहा हूं, दे रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं, तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा ना. इफ यू डोंट स्टडी देन हाउ वी कैन मेक अप. वी कांट मेक अप मैन. देन इन दैट केस इट इज नॉट पॉसिबल टू हेल्प यू. और क्या करना है, ये जो एग्जिबिट 2 है, वंस यू स्टार्ट रीडिंग, इसके बेसिस पे रिक्वायरमेंट, आपका रिक्वायरमेंट एग्जिबिट अभी तो चल रहा है, उसके बाद रिक्वायरमेंट टास्क 2 इसी के बेसिस पे है. ठीक है, आप इसको नहीं पढ़ेंगे, बस यहीं पर रुक जाएंगे. उसके बाद इसका आंसर लिखेंगे विद इन 60 मिनट्स, रीडिंग राइटिंग एवरीथिंग. गलत होने दो ना यार, क्या होएगा, थोड़ी ना कल एग्जाम, अभी तो वी हैव स्टार्टेड. लिखने के बाद फिर मॉडल आंसर्स देखेंगे, मैं दूंगा,
मैं अभी नहीं दूंगा, मैं 2 दिन बाद दूंगा आपको मॉडल आंसर्स। फिर बाद में एक और क्वेश्चन एग्जिबिट 4 रीड करेंगे, टास्क 3 एग्जिबिट 4 रीड करेंगे, उसके बेसिस पे टास्क 3 रीड करेंगे, और ये टास्क 3 का आंसर्स भी विद इन 1 आवर कंप्लीट करेंगे। जानबूझ के मैंने यहां पर मॉडल आंसर अभी नहीं दिया है। एग्जिबिट 2, एग्जिबिट 3 माने टास्क 2 एंड टास्क 3 आपको 1 ही घंटा करना है। नहीं जानते जो जानते, कल एग्जाम नहीं है, टुमारो इज नो एग्जाम, इट्स सो वी जस्ट स्टार्टेड, एवरीबडी नीड टू प्रैक्टिस। अगर पास होना है, नहीं होना है आपकी मर्जी है। यस मिस्टर सुरजीत। Surojit, whatever you were saying, we are not able to hear, yaar. You can type. Since the internet is creating problem at your end. No notes to be prepared. Whatever notes need to be prepared, I am sharing. After writing a particular answer or evaluating, you just on the basis of that, what extra things you got, which you need to take into mind, बस वही लिखना है और कुछ नहीं. No separate notes to be prepared. Every question when you are writing an answer, you are comparing with the model answers. Based on that, what you have understood, that you will be writing. You can. There is no problem, but I will say, with Study Hub, you should be preparing after at least, let me complete 2 case study. One is this, one more, then you start doing the questions from Study Hub. Give me around 15 days, September end. Because usse we will be covering different aspects in different case study. Then in that case, you will be much better prepared to write the answers. But the Study Hub and the exam kit are not talking about case study type questions. They are talking about like APM type questions. So which will help you technically better, but we don't require to become so much technical. Because as I said, I have changed my strategy of teaching strategic case study from this batch. Everybody need to be scared. Worst to worst, I am saying, suppose you don't pass. Suppose we will be giving EPM, SBL together in December. Worst to worst. But according to me, you will pass. So what is the homework for the next class? You all will be reading the entire notes properly. Writing the first, second, third. First we have discussed, second and third in 1 hour. I will be sharing the model answers on Sunday so that you can go through. And we will discuss on Monday morning all the technical areas and everything relating to Exhibit 2 and Exhibit 3, relating to Task 2 and 3 of this case study. If the time will not permit, then we will discuss in the next class after Monday also. As I said, this case study we will be running for 4 classes. This is only the second one. First one, nothing I taught. Just that I discussed the pre-scene, what is written. In short. Ana? Okay? Leaving for today. Thank you to all of you. Take care. Please follow my instruction. That's my request to all of you. Nothing else. Sir, we need to submit this. Not submit. Not required. Submit बाद में. अभी आप लोग बहुत अर्ली में है ना. सबमिट करने का चालू करेंगे 1 महीने बाद, अराउंड 10th अक्टूबर है. अभी आप लोग को तैयार रहना है, करके रेडी रहना है. हम लोग 1 महीने बाद सबमिशन में जाएंगे. बिकॉज अभी आप लोग तैयार नहीं है ना, अभी थोड़ा ब्रूमिंग चल रहा है, यू कैन से ग्रूम कर रहे हैं अपने आप. ठीक है, या ओके. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. स्टडी हार्ड. हैप्पी वीकेंड.